Tanvi Mathur will be your host for the afternoon session of the second day of the National Youth Conference on Indian Knowledge Systems. We hope you gathered some valuable insights from the keynote sessions held till now. More such thought provoking keynote sessions by distinguished speakers await you in the upcoming sessions. Mann Ki Baat is designed with a deep understanding of the wealth of ideas and suggestions held by our students and esteemed faculty members in the field of IKS. This program is dedicated to giving voice to your thoughts and fostering insightful conversations. Now, we'll be calling upon the participants for Mann Ki Baat. I would like Dr. Lalita Sharma to come up on stage. Each participant will be given only 3 to 4 minutes for sharing their thoughts. Namaste, everybody. Sabhabhya, Sabhapatibhyasho Namaha. I'm extremely grateful to IT Roorkee for giving us this opportunity to be here. The three reasons why I chose to come for this National Youth Conference in IKS predominantly was I was starstruck by all the stalwarts who are not here at the moment. And I did not want to miss an opportunity to actually see them because they have spent their entire life, they have been spending their entire life in founding this system and also going through a whole lot of bottlenecks. So just to meet them, thank them in person, and that was my first goal. The second goal was especially coming from humanities and social sciences in a conventional university. It feels quite lonely to be doing this work. And it sometimes feels like you're all alone pursuing this. And therefore, I wanted to see like-minded people who are in this domain and are persistent to make changes. And that's the second reason I'm here. And the third reason was Professor Danino, Professor Ram Subramaniam, etc., show extraordinary rigor in IKS research, which is generally absent. And that I wanted to inherit. And watching them talk and evolve ideas, I thought would be another wonderful area. But what I didn't anticipate was the sheer volume of people who are like-minded. So it was pretty overwhelming. And I cannot adequately thank Sir Gauri Shetty, sir, the amazing volunteers, each one of you, and the audiovisual system and the background team. Before I end, I just want to share my thoughts. Actually, in the panel discussion, the question that I raised was discussed by Professor Danino, and my thought and my poster for this, the paper that I had written was basically on the urgent need to found Vedic culture studies as a school vis-a-vis the Western analytic, deconstructivist culture studies we have in especially the humanities and social sciences domain. And this is not exclusively a humanities problem, because this is already having repercussions in sciences in terms of critical race theory being adapted to superimposed on the caste domain and so on. So these are important. What I look forward to is how IKS will drive policy making, academia, protecting indigenous communities. Harshvardhan sir had mentioned with a lot of passion, corporate ethics, organizational behavior, and so on. And the other thing that I'm going to take away is the joy of meeting some of the practitioners of IKS who I have only met in virtual platforms so far, and meeting them in person and feeling the belongingness was wonderful. I once again take this opportunity to thank those who are absent at the moment here, as well as the organizers. Thank you very much. I request the volunteers to go outside and call upon the participants.
Next, I would like to call upon Mr. Deepak for Mann Ki Baat. Uh, Good afternoon, all. Firstly, I'm thankful to IIT Roorkee and Dr. Gauri Shetty for permitting us to share our views on IKS. So, I have a few suggestions with respect to the IKS. Maybe the members are not there, so hopefully it will be forwarded to them. So, my first suggestion was NPTEL was very much popular among the IITs, you might already know. Similar to that, if we have courses like, for example, in Introduction to Manuscriptology or Introduction to Ayurveda or Vedic Sciences, if these courses are where if there are run parallel something related to NPTEL Swayam, so those will be very much popular among the country. That is the first suggestion. And second one is uh, we have a Toastmaster clubs. I think many of you have been aware of that. So similar to that, if we have a IKS related Toastmaster clubs also, where each of the centers will meet every monthly or bi-monthly or something like that and share their views, then that will be a interdisciplinary aspect of it. So my friend was also suggesting that in the Konark temple, where I think you might have already seen various aspects of engineering as well as the space science and then arts and science technology, all are merged to form that temple, right? So similarly, this interdisciplinary approach is very much important, and such Toastmaster clubs in terms of IKEAs will help, will serve that purpose. And my last suggestion is if there is any possibility of having the suggestions from the student side, hopefully by creating a Google Forms or something like that monthly, if they are circulated among various colleges of engineering, then they'll be putting their valuable inputs, and that will be carried forward to IKS. Yeah, this is it from my side. Yeah, thank you. Thank you so much. Next, I would like to call upon Dr. Sunita Singh. थैंक यू आईआईटी रुड़की आपने इस कार्यक्रम को काफी गंभीर चिंतन करके और काफी अच्छे एक स्पीकर्स के साथ आपने अरेंज किया जो भी बातें हुई यहाँ पर वो पुनः चिंतन करने के लिए मजबूर कर रही हैं क्योंकि मैं टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ माई सेल्फ डॉक्टर सुनीता सिंह फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कल से लगातार यहाँ पर सुनते हुए 3 बातों को लेकर के मैं अपने सजेशन रख रही हूँ curriculum and textbook, pedagogical practices, and crisis of modernity. Crisis of modernity को लेकर मैं कहना चाहूंगी self-centered liberalism and secular neutrality. You just rethink about the secular neutrality. Fraternity got sandwiched somewhere between the liberty, capitalism, and equality. Animism and reification, enlightenment of totalitarianism, and reason is become terror. We are living in cosmos, but we feel that we are living in chaos. So certain different kind of chaos we have, social chaos, environmental crisis, and I think that the IKS उन सब चीजों का solution है. In relation to curriculum and textbook, I would like to suggest कि बिकॉज एज MSc केमिस्ट्री जब मैं केमिस्ट्री पढ़ती थी तो मेटलर्जी में मैं सारे वेस्टर्न कंसेप्ट को पढ़ती थी और मुझे उसमें सिर्फ एक नाम ऐसा याद है पॉलीमर में जिसका नाम था रामाचंद्रन बॉन्ड एंगल पूरी क्लास 12th की किताब में पढ़ गई थी और रामाचंद्रन बॉन्ड एंगल पर आने पर मेरा माइंड स्टक किया था एज अ पीजीटी केमिस्ट्री ओ वन ऑफ द इंडियन इज हियर And I rethink about this chemistry because I am completed my MSc and just pursue PhD in chemistry. And then I think that कि क्या यहाँ कुछ नहीं हुआ? So rather than proposing the elective IKS syllabus and IKS curriculum, it is important we have to go for the integrated approach to frame the curriculum and textbook in relation to propagation of IKS knowledge. Second, I want to quote here because presently I am teaching philosophy of education in Delhi University. So I want to say something else upon the pedagogical practices. In Upanishads, in Kathopanishad, in Vridhanak Upanishad, in total 12 Upanishad, teacher never gave any answer.
And we always discuss about Vygotsky and constructivism and a lot of the psychological theories that learner-centered. You have to go for the pedagogy, which is Upanishad-centered. You have to raise the question that teacher never answer. याज्ञवल्क्य and गार्गी संवाद जब होता है और वहां पूछा जाता है कि आत्मा क्या है, तो याज्ञवल्क्य कहते हैं गार्गी तुम बताओ, और वहां पे गार्गी कहती है कि शायद सेंस ऑर्गन होगी आत्मा, सोल। तो कहते हैं नहीं, सेंस ऑर्गन तो वो है जिसमें एक ठंडा और गर्म पता लगता है, वो कैसे हो सकता है, थोड़ा और सोचो। तो कहते हैं कि मन होगा। तो मन तो इधर उधर चित्त बदलता रहता है, तो ये होगा। तो कहते नहीं गार्गी थोड़ा और सोचो, और लास्ट में गार्गी स्वयं आंसर करती है। सो ये जो हमने जो एजुकेशन दी ना, लर्नर सेंटर्ड वाइगोत्स्की मॉडल कंस्ट्रक्टिविज्म, वहां हायर एजुकेशन में एक छूट मिल गई कि बच्चा पीपीटी आकर के प्रेजेंट करेगा और मुझे क्लास लेने की जरूरत नहीं है। We are the higher education teachers, so it is very important we have to do a lot of work on IKS and on our pedagogy, that is शास्त्रार्थ। और बहुत अच्छा लगा, आयोजनकर्ता को बधाई देती हूँ जिन्होंने शास्त्रार्थ का भी यहाँ पर आयोजन किया है। Dialogue and discussion is the part of pedagogy of the Upanishad, and it is important that there is the 4 Vedas, 6 Vedas, because मैं पढ़ाती हूँ philosophy of education. It is not possible that we have to attain all, but Gita is important, which is just जैसे फनन होती है, उससे छन करके ज्ञान आया 18 अध्याय के अंदर। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विदुते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। बिना गोपाल नंदन के कर्म योग के प्राप्त नहीं हो सकता। जैसा कि मैं IIT रुड़की के हर हॉस्टल पर देख रही हूँ कि श्रम के बिना किसी चीज की प्राप्ति नहीं, कर्मयोगी बनाना होगा। और ये IKS जो हमें यहाँ पुनर्चिंतन करने के लिए दे रहा है, वहां मैं ये पहले सुझाव दूंगी, 2014 से हर मंत्रालय में मेरे प्रश्न और ईमेल जाते हैं कि गीता हमारे करिकुलम का पार्ट कब बनेगी। मैं पुनः ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज गीता की कुछ अच्छी चीजों को सुभाषितानी से नहीं, इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत हमारे करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Next, I would like to call upon Dr. Somu Singh. I repeat, you'll be given just 3 to 4 minutes to share your thoughts. इस कक्ष में उपस्थित सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम। मैं सोमू सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने जब डायनेनो सर को सुना और उस सेशन में उन्होंने कहा कि वी हैव टू क्रिएट फ्रेश पेडागॉगीज, तो ये बहुत जेन्युइन लगता है मुझे। जब मैं अपने बीएड का करिकुलम देखता हूँ और एनसीटीई के करिकुलम फ्रेमवर्क को देखता हूँ और उसमें पाता हूँ कि कहीं भी हमें इंडियन टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जैसा नहीं दिखता। जब हम ब्लूम्स को लेना पड़ता है हमें, तो हमारे पास अपना इंडियन वे नहीं है पेडागॉजी का, है, लेकिन हम उसको उस तरीके से करिकुलम में इंटीग्रेट नहीं कर पाए हैं, जहां हम श्रवण मनन निध्यासन स्वाध्याय और बहुत सी मेथड्स की बात जो उपनिषद में पिछले 2 दिन से दूसरा दिन भी आज चल रहा है, चर्चा हुई है, और नए नए शब्द आते रहते हैं। जब हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव पेडागॉजी, क्रिटिकल पेडागॉजी और मल्टीकल्चरल पेडागॉजी, और बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। तो इस पूरे शब्दों के मायाजाल के बीच में हमें कहीं ना कहीं इंडियन पेडागॉजी को भी इस तरीके से रिसर्च करके और एक बीएड के करिकुलम, टीचर एजुकेशन करिकुलम में जहां हम टीचर्स को तैयार करने की बात सोच रहे हैं, उस पर हमें काम करना होगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात जो मेरे मन में हमेशा चलती है, और उसका रेफरेंस अभी सुब्रमण्यम सर जब बोल रहे थे, उन्होंने सोसाइटी रिकॉग्निशन की बात की कि क्या वजह है कि हमारे पास इंडिजिनस साइटेशन सिस्टम नहीं है। हमें देखना पड़ता है मोस्ट साइटेड आर्टिकल, मोस्ट रेडिकल रीड आर्टिकल जो हमारे स्कोपस इंडेक्स जर्नल है। क्या अब जो आईकेएस इस समय काम कर रहा है डिवीजन, जितने भी अच्छे रिसर्चेस हो रहे हैं और होंगे, उनको हम अपने जर्नल्स में इस तरीके से नहीं पब्लिश कर सकते। पब्लिकेशन तो हो ही रहा है, लेकिन ये रिकॉर्ड अब हम इस टेक्नोलॉजी के दौर में नहीं रख सकते कि हमारे यहाँ इंडिया में सबसे अच्छा रिसर्च कौन सा हुआ और जिसे सबसे ज्यादा इंडिया में कोट किया गया, बाहर कोट किया गया, पढ़ा गया। ये कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन के लिए हमें अपना इंडिजिनस मॉडल बनाना होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी का एक इनपुट बहुत जरूरी है। एक बात और बार बार आ रही है, क्रिएशन ऑफ न्यू मॉडल्स ऑफ आईकेएस।
मेजर फोकस है कि हमें साइंटिफिकली इसको वैलिडेट करना होगा, प्रूफ करना होगा। थोड़ी सी मेरी चिंता रहती है कि कहीं इसको ऐसा करने में हम ये एक सावधानी बरतनी होगी कि हम एप्लीकेबिलिटी को भी ध्यान में रखेंगे, जो करंट सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जब डिसिप्लिन इंटरडिसिप्लिनरी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और ट्रांस डिसिप्लिनरी नॉलेज की बात अब हो रही है, इंक्लूजन ऑफ नॉन एकेडमिक स्टेक होल्डर्स, जैसा कि हर सर ने बड़ी सही तरीके से इस बात को हाईलाइट किया। क्रिएशन ऑफ नॉलेज यूनिवर्सिटीज में, हायर एजुकेशन सेंटर्स में नहीं होगा, कहीं भी हो सकता है, पर एक ऐसी ज्वाइंट टीम, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम जिसमें नॉन एकेडमिक स्टेक होल्डर्स भी शामिल हों क्रिएशन प्रोसेस में, तभी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से, एप्लीकेबल सॉल्यूशन, साइंटिफिकली टेस्टेड सॉल्यूशन शायद हम खोज पाएंगे। चैलेंजेस बहुत हैं मित्रों, बार बार ये बात आ रही है कि हमें टीम बनानी है, ज्यादातर लोगों को मोटिवेट करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ IKS अपने आप डिसिप्लिन में उसे कराना है, ये चैलेंज है। फिर स्कूल करिकुलम में और फिर सिलेबसिस में, तो हम सबको आगे आना होगा और अपने अपने डिसिप्लिन में उस एस्पेक्ट को, उस पर्सपेक्टिव को रिसर्च करके लाना होगा, फिर अपने डिसिप्लिन में इंटीग्रेट करके फिर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को भी ध्यान में रख करके, मेरे मन में चिंताएं रहती हैं। बहुत सारे सवालों का समाधान हमारे विद्वत जनों ने किया इस संगोष्ठी में। मुझे मौका देने के लिए आयोजन समिति को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Now, next, I would like to call upon Bhadra Priya. Okay, Bhadra Priya is the youngest participant for Mann Ki Baat. She came all the way from Dubai. She is from 7th standard. So I would like you to give a great applause for her. Namaskaram. I'm Bhadrapriya, a high school student actually. I'm a little bit nervous. I didn't know all of these people would be, all of you guys would be in college. So the question I'd like to present is that there are a lot of Indians and Indian schools and colleges outside of India. And a lot of us are interested in and passionate in, about Indic sciences. It would be nice if such programs can be organized or at least promoted outside India as well, even online or smaller programs that make us part of this world. Many of us go to US or Europe for higher study. However, when we think of starting our career, the thought of coming back to India is strong, but we're also anxious and apprehensive because our only exposure to India is the 1-month vacation here. Such opportunities might give us more familiarity with people and systems here and give us confidence to return to Bharat. That's it. Thank you. Thank you so much. Next, I would like to call upon Ananya Mitra. Okay. Next, I would like to call upon Naveen KR. श्रीगुरुभ्यो नमः। अहमत्र इदानीं संस्कृतेनैव वक्तुम् इच्छामि। IKS विभागाय तत्र मम प्रार्थनाद्वयं वर्तते। तत्र प्रथमा प्रार्थना भवति, इदानीम् एतादृशकार्यशालाभिः अनन्तरं विविधसङ्गोष्ठ्यः तत्र चाल्यन्ते। एताभिः अवश्यं तत्र उपयोगस्तु भवत्येव, परन्तु छात्राणां कृते अनन्तरं विदुषां कृते अनेन उपयोगः भवति। तेषां पितरः तत्र ये भवन्ति तेषामपि कदाचित् इच्छा भवति IKS विषये ज्ञातव्यम्। इत्युक्ते मया बहुत्र दृष्टं, सामान्यजनाः ये भवन्ति तेषां कृतेपि तत्र एतद्विषये ज्ञातव्यम् इति इच्छा भवति। ते तत्र इंटरनेट् मध्ये पश्यन्ति, तत्र बहु वीडियोस् इत्यादिकं लभ्यते, परन्तु तत्र विद्वद्भिः कृतं कार्यं तत्र बहु अत्यल्पमेव लभ्यते। अतः तत्र किं वा कर्तुं शक्यते इति तत्रापि
क्रमः स्वीकर्तव्यः इति एका प्रार्थना अस्ति। अनन्तरं द्वितीयविषयः अस्ति अस्माकं ये तत्र पौरोहित्यं कुर्वन्ति तेषां विषये अत्र किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। तत्र 50% जनानां किमपि ज्ञानं न भवति। यथा इदानीं मया बहुत्र दृष्टं ग्रामेषु अनन्तरं नगरेषु वा ये पौरोहित्यं कुर्वन्ति कदाचित् सः क्वचित् विद्यालये अनुत्तीर्णः अनन्तरम् अन्यम् उद्योगमपि कर्तुम् असमर्थः सः, परन्तु किमपि कर्तुं न शक्तः अनन्तरं पौरोहित्यं कर्तुम् आगच्छति, तदेव उद्योगत्वेन स्वीकरोति। परन्तु सः पुरुषसूक्तं तद् पारायणं तस्य पारायणमपि कर्तुम् असमर्थः नगरेषु आगत्य तत्र महान्तं यज्ञं कारयति। एतादृशकर्मणा तत्र जनानां श्रद्धा या काचिदपि अस्ति सा अपगच्छति। अतः तेषां कृते अस्य विषये किमपि करणीयं, किमपि तत्र सर्टिफिकेशन् वा अथवा किमपि स्ट्रीम्लैनिङ्ग् कृत्वा कोऽपि तत्र परिहारः ज्ञातव्यः इति एतद् वक्तुम् इच्छामि। धन्यवादः। Thank you so much. Next, I would like to call upon नवीन भ्राता भवता यदुक्तं तत्र विषयद्वयस्यपि उत्तरं वर्तते। प्रथममस्ति यद् अस्माभिरेकं धाराकार्यक्रमः सञ्चालितं वर्तते। प्रतिमासं भिन्नभिन्नविषयं स्वीकृत्य तद्विषये कार्यद्वयं कृतम्। एकमस्ति यद् एषः विषयः यदि 2047 मध्ये पूर्णरूपेण सर्वत्र ज्ञातं भवेत् तर्हि तदर्थं किम् अस्माभिः करणीयं, तत् कथं दृश्यते, पुनः तदर्थं कीदृशः मार्गः कल्पनीयः भवति इति प्रथमभागः। द्वितीयं जनभागीदारी इति अस्माभिः प्रयतितमस्ति यत् जनसामान्यस्य कृते कथम् एतस्य विषयस्य परिचयः भिन्नभिन्नरूपेण कर्तुं शक्यते इति एकः प्रयत्नः IKS विभागेन कृतम् अस्ति। किन्तु भवता यदुक्तं यदि मया तथैव श्रुतम् अस्ति यत् IKS क्षेत्रे ये कार्यं कुर्वन्ति तेषां पितृभ्यां कृते किमपि यदि कार्यक्रमः आयोजयितुं शक्यते इति तथा आसीत् वा? नैव, सामान्यजनानां। तर्हि जनभागीदारी अस्माकम् औट्रीच् अस्ति IKS विभागस्य, तद्वारा तत्र वयं तस्य उत्तरं दातुं शक्नुमः। द्वितीयम् अस्ति भवता उक्तं यत् पौरोहित्यं तत्रापि सान्दीप NCVET इति अस्ति, ह्यः खाल्सी महोदय आगतः अस्ति, तस्य या संस्था अस्ति National Council for Vocational Education and Training, ते इदानीं सान्दीपनि विश्वविद्यापीठेन सह तथैव तैः विचारितमस्ति यत् पौरोहित्यम् इत्यादिकम् अस्माकं शास्त्र्यं यद्यदस्ति ये तद् उद्योगरूपेण कुर्वन्ति तेषां कृते प्रमाणपत्रादिकं करणीयमस्ति। यतः तद्वारा किं वदामः स्तरनिर्धारणं भवितुमर्हति, येन जनाः तत्र मूढाः न जायन्ते। अस्तु, धन्यवादः। Thank you all for sharing your valuable thoughts. For the third keynote session of the day, I would like to invite Professor P. Ram Manohar from Amrita University. Ayam Mahoday.